yes, sir. You are visible. Sir, this is the first bail application under 439 for offences 820. What was seized? What was seized, and what is the quantity of the contraband? 45 gram of smack. It is Smack? non-commercial quantity. Yes, your Sir, ये lordship. स्मैक कहाँ मिलती है, sir? Sir, no idea. No idea. So that is it. It is a contraband which is not easily available. Yes, sir. So unless and until a person has a relation or contact with a particular kind of a people, he cannot get it easily from the market. But your lordship, in present case, I am falsely been implicated as the section 50, which is the indefensible right of the accused. So okay, just a minute. So ये कहाँ से सीज हुई है? मेरे पॉकेट से. एक सेकंड, स्टेट काउंसिल से पूछिए सर, ये कहाँ से सीज हुई है? पॉकेट से हुई है. अच्छा, इनको कोई इंफॉर्मेशन वगैरह सेक्शन 50 की दी गई? हाँ सर, सेक्शन 50 की दी गई, उसका सर्टिफिकेट लगा हुआ है सर. योर लॉर्डशिप, पंचनामा देखा जाए, मेरा कहीं पे भी रिटर्न कंसेंट नहीं है कि मैं पुलिस को अपना सहमति दे रहा हूं. और अभी 6 अक्टूबर 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया इस पे, रंजन कुमार चंदा वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. उसमें योर लॉर्डशिप पैरा नंबर 63, पेज नंबर 49 एंड 50, उसमें ये क्रक्स उसका ये है कि अगर पुलिस का ऑब्लिगेशन है कि अगर वो सर्च, that is settled law. If the search of the person of an accused is to be done, then the provision of section 50 is to be followed, right? There is no difficulty. yes. वो इनका कहना है कि पंचनामा पे इनका कोई सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं है. सिग्नेचर लिया गया है, मेरा रिटर्न कंसेंट नहीं लिया गया है. यही जजमेंट में यही कहा गया है कि रिटर्न कंसेंट अनिवार्य है सर. सर क्या लिखा क्या है उसमें आपके पंचनामा में? Can you show it on the camera? यार इसको जरा इलाज कर सकते हो क्या? प्रेस को फैला सकते हो क्या? थोड़ा सा ऊंचा कीजिएगा. सीधे थोड़ा सा नीचे. विकास आप चुप रहिए थोड़ा सा. और ऊपर नीचे विकास सरकारी वकील साहब का वहां से थोड़ा सा वो पूरे स्क्रीन पे उसको इलाज करो. छोटी विंडो में है मेरे पास, उसको पूरी फुल स्क्रीन पे लेके आओ उसको. अच्छा हाँ ठीक है, 1 मिनट में देख लेता हूँ. ओके ठीक है, देखते हैं. सर एनीथिंग एल्स? सर इसमें सेक्शन 50 के पंचनामे में 3 ऑप्शन दिए गए थे. पहला, पुलिस से आप अपना सीजर करवा सकते हैं, नहीं तो किसी मजिस्ट्रेट या गैजेटेड ऑफिसर से. ये मुझे इंफॉर्मेशन दी और मैंने कहीं पे भी इनको रिटर्न कंसेंट नहीं दिया. मैंने इनको मना किया, फिर भी इन्होंने मैंने बोला मुझे मजिस्ट्रेट से या गैजेटेड ऑफिसर से अपनी जांच करवानी है, फिर भी इन्होंने मेरी जांच की. वो सीजर योर लॉर्डशिप इज इलीगल. आप कैसे कह रहे हैं? आपने कंप्लेंट कब की है? एटलीस्ट उस समय तो आप कुछ नहीं बोल सकते थे. आपने अरेस्ट होने के बाद क्या किसी मजिस्ट्रेट क्या रिमांड के समय पे एप्लीकेशन लगाई कि मैं इनसे नहीं करवाना चाहता था, उनको मना किया था, उसके बावजूद भी इन्होंने ये सब किया है? लॉर्डशिप ऑलरेडी बोला गया था, बट नहीं ना, पहली जब आप मजिस्ट्रेट के यहाँ पे पहली बार रिमांड पे प्रोड्यूस किए गए होंगे, तो क्या आपने वहां पे कभी ये बताया मजिस्ट्रेट साहब को? बट लॉर्डशिप मेरा सबमिशन ये है. अरे बट नहीं है, पहले हाँ या ना में तो जवाब दो, उसके बाद हम सुन लेंगे ना आपकी बात को. मैंने ये कहा था कि सेक्शन 50 का वो नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से. कहा था, दरखास्त लगाई थी कोई? हाँ ये लॉर्डशिप, मैंने जब आर्गुमेंट मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आपकी बात, आप मेरी बात नहीं समझ रहे. जब आपका पहली बार रिमांड लिया गया था तब की बात कर रहा हूँ. जब रिमांड लिया था लॉर्डशिप मैं अवेलेबल नहीं था वहां पे. आपकी उपस्थिति अनुपस्थिति से हमें क्या लेना देना? हम तो एक्यूज के कंडक्ट की बात कर रहे हैं ना. हाँ जी योर लॉर्डशिप. You may not be there, but लेकिन arguments which you are developing that in fact you had refused. So this appears to be a mind product of a lawyer. No, your lordship. How can you say no when you did not raise this question before the magistrate on the first available opportunity?
I can understand that so far as police authorities are concerned, there was no occasion for, no opportunity for you to make any complaint. When you were produced for the first time before the magistrate, you could have said कि सारी सब फर्जी कार्रवाई की गई है मेरे खिलाफ. Sir, For what purpose is the person are produced before the magistrate? Your Lordship, सबमिशन ये है कि मैं इसीलिए I call it the doctrine of police state कि अपने whim और fancies के लिए ऐसे ही करते हैं सर. मैं उसी को तो जज करना चाह रहा था ना. जी सर. मैं उसी के लिए तो जज करना चाह रहा था कि whether it is the mind product of a lawyer or it is the factual aspect. It is the factual aspect, Your Lord. Mr. Counsel, you are leveling personal allegations against the police authorities. Then, no, what do you mean by the whims and wishes? Is it not a personal allegation against the investigating officer? And if you are making a personal allegation, then you have to substantiate the same. That is the simple question. But you ये कहे कि साहब इन्होंने ऐसा किया, this is not correct, this is against the law, I can understand. Yes. And you are attributing motives to the authorities, then make out a case that on first available possible opportunity you had raised this point. Yes, yes. आप whims and wishes पे जाएंगे तो हम भी फिर उसको उसी एंगल से देखेंगे. चलो मैं देखता हूँ उसे. Your Lordship, एक last Also, question. there is a criminal, one more criminal record of section, my lord. Against the present applicant is Olaf 147, 148, 294, 323, 506, 327, and 329. IPC में है ना, not under NDPS. Yes, my lord. Okay. Your Lordship, applicant is only 19 years old. No problem. Sir, अगर by chance हमने allow करने का मन नहीं है तो क्या withdraw करनी है कि merits पे orders लेने हैं? Sir, merits पे ही लेना है. Merits पे लेना है. 56961/2023. Shri so and so through video conferencing. Shri so and so for this state. It is submitted by counsel for applicant that although 43 grams, 45. 45 grams. Although 45 grams of smack has been shown to, it is submitted by counsel for applicant that according to the prosecution case, 45 grams of smack was seized from the possession of the applicant, but in fact, the mandatory provision of section 50 of NTPS Act was not followed. No written consent was obtained from the petitioner. In fact, the applicant, petitioner applicant in fact, the applicant had refused to give his search to the police officer. In spite of that, he was searched in violation of the mandatory provisions of section 50 of NDPS Act. Per contra, the application is vehemently opposed by counsel for state. It is submitted that not only 45 grams of smack was seized from the possession of applicant, but he has a criminal history and one more offense under the provisions of IPC has been registered against him. Heard the learned counsel of the parties. It is the contention of the applicant that police authorities are working as per their whims and wishes, and they are not following the provisions of law. In order to make allegations of bias, the applicant has to substantiate his case. Accordingly, the counsel for the applicant was directed to make a submission as to whether the applicant had ever disclosed the factum of false application to the magistrate on the day when he was produced for remand. It was submitted by counsel for the applicant that since he was not counsel at that relevant time, therefore it is not known as to whether the applicant had ever raised any objection in this regard or not. Next. So far as the submission made by counsel for the applicant is concerned, the same has no relevance because it is for the applicant to make out a case and not for the counsel to make out a case of bias. In absence of any objection by the applicant before at the time of his remand, therefore it is clear that the allegation of bias has been alleged against the police authorities without there being any foundation for the same. In view of the fact that 45 grams of smack was seized from possession of the applicant, this court is of considered opinion that no case is made out warranting interference. The application fails and is hereby dismissed. For grant of it, not warranting interference, but for grant of it. The application fails and is hereby dismissed.